जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम सलाम सर। जी जी अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? जी सर, शुक्र अल्लाह का सर। उसामा बोल रहे हैं जी? नहीं सर, एहसन बात कर रहे हो। उसामा है मीटिंग में, अभी उनका माइक ऑफ है सर। अच्छा 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 अच्छा। उसामा, आप मुझे सुन सकते हैं? सर को काफ़ी सारी स्लाइड्स पिक्चर ही रहती है सर, वो अभी हमें आई नहीं है सर, तो वो काइंडली किसी टाइम भेज दें हमें। जी जी, मैं आज ही भिजवाता हूँ जी। जी प्लीज। सर वो उसामा कह रहा है उसका ना, वो कोई हैंड फ्री का इशू है माइक का, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में देख ले, वहाँ कह रहा है, वहाँ से मैं जवाब दे दूंगा कुछ। मतलब मैं शुरू कर लूँ जी? हाँ जी सर, वो क्वेश्चन आंसर सेशन में देख लीजिएगा, कोई उसामा को सवाल करना हो या कोई इशू होगा तो। चलिए चलिए, ओके ओके ओके। प्लीज, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज आवर सेक्शन ई, मॉड्यूल ई, और the topic is risk management. In this module, so specifically we'll be going to study what risk control, risk management. So आज हम first of all we are going to see managing risk and the like certain things. Now in fact uh, the risk management require, uh, because every sort of businesses do feel and do face a certain risk. Here, this slide is showing business uncertainty, which is operating risk, and there is a financial risks like. So, in such a risk need to be adjusted accordingly. Now, the concept of risk is what, in fact, the possibility of losing some of all the returns. the ये क्या है इसमें थोड़ा सा, the possibility of losing some of all the return that you have expected to earn. Risk is not a negative concept. Risk is necessary in order for opportunity to exist. It can be deterrent to competition, leaving the risk taker to take advantage. So, in fact, my dear, basically, uh, the in risk possibility of losing. Okay, what are the chance that you may not be able to get your goal or to get your target? तो आप उस टारगेट से जितना दूर हैं उसके जो चांसेस हैं वो आपकी पॉसिबिलिटी होती है. दैट्स वाई इन ए सिंपल सेंस हम रिस्क की डेफिनेशन कर सकते हैं कि the probability or possibility of deviation from the expected outcome. हमारे expected outcome, वो हमारी expected earn है, उसमें जितने deviation expected होगी और उसके जो chances हैं वो possibility है. तो this is basically called. Now I think statistic में ये बड़ा अच्छे तरीके से इसको define किया जाता है, जिसमें हम डेविएशन फाइंड करते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो जितनी ही किसी चीज़ में लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ इंडिकेशन
that there is a chance of a risk. Risk is more and more and more. Risk is not a negative concept. दिस मीन दैट हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि रिस्क जो है वो एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, जबकि रिस्क एक नेगेटिव चीज़ नहीं है. रिस्क इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट. तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है तो उसके अंदर नेचुरली रिस्क ज़रूरी होता है, ठीक है. और इट कैन बी अ डेटरेंट टू कंपटीशन. मीन कि डेटरेंट टू कंपटीशन का मतलब है कि आप रिस्क की वजह से कंपटीशन को रोक सकते हैं. लिविंग द रिस्क टेक टू टेक एडवांटेज. लिविंग द रिस्क टेक टू टेक एडवांटेज का मतलब ये है कि आप रिस्क को अगर नहीं लेना चाहते तो यू कैन नॉट टेक द एडवांटेज. नाउ इन फैक्ट for understanding risk, this is current position, that is a desired position. तो असल में इस करंट पोजीशन और डिजायर्ड पोजीशन के दरमियान जो गैप होता है वो हमारा प्रॉब्लम होता है. द रिस्क दैट स्टैंड बिटवीन पोजीशन ए एंड पोजीशन बी कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमिन. They may affect the achievement of the strategy more in some area than in others. In considering strategic risk management, the organization is looking to move from current position A to desired position B as shown at this level. Now, my dear, in fact, in the strategic risk, manager can predict that there will be a range of both foreseeable and unforeseeable risk affecting upon this risk. तो हम जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाते हैं फॉर मेकिंग अ स्ट्रेटजीज, तो नेचुरली उन स्ट्रेटजीज को जब आप देखते हैं तो मीन के स्ट्रेटजीज मे नॉट बी रिमेन सक्सेसफुल टू अचीव जिसके लिए हम बना रहे हैं. तो वो जो हमारी फेलियर ऑफ स्ट्रेटजीज जिसमें उस हद तक हम उन टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे, वो हमारी रिस्क फेलियर का जो है उसमें वो रिस्क पाया जाता है. एक्चुअली द बेसिक रिस्क टाइप्स, हमारे जो टाइप्स ऑफ रिस्क हैं वो स्ट्रेटेजिक रिस्क हो सकते हैं, चेंज या प्रोजेक्ट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, अनफोर्सीबल financial and knowledge wise risk might be there, internal and external, speculative or static risk might be there. We are going to talk the strategic risk. A strategic risk relate to risk at the corporate level, and it affects the development and implementation of an organization strategy. In fact, you know that the strategic risk, because the corporate level is intended to make strategies, and the while it is affect the development and implementation. क्योंकि जो आप एक स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं उसकी डेवलपमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन में जो डेविएशन है वो आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क है. It includes risk relating to the long-term performance of the organization. Naturally, the strategic management involve achieving the broader goal for a long term. So that's why I think the area of the strategic risk would always be a long term, because we have made a strategy whose time period is a 5 year, 10 year. Now, within that 10 years, the strategy may go deviated within that time, or the desired performance may not be achieved. So, naturally, that strategic risk would always be a long term performance of the organization. This includes a range of variables such as market, corporate governance, and stakeholders related. In fact, ladies and gentlemen, once we talk about the strategic management process, so we all know
It started from VN, mission, objectives, environmental assessment, internal environmental assessment, considering alternatives, select the appropriate strategy, implementation, controlling, and evaluating and feedback. So, as we know, VN, what the company wants to be in the future, mission, the purpose of company existence, objective, objectives flow from mission, marketing, finance, production, profitability, and R&D. Environmental assessment, external variables may affect operations, so government regulations, competition, environmental scanning, political instability, and currency instability. Now, the currency instability mean it may be related to present or it may be जो हम currency की बात करते हैं. But then we'll be moving towards the internal uh, competitor analysis की तरफ और फिर हम considering alternatives, overall approach, and the entry strategy. Then we select the appropriate strategy, mean that whether you have to compete either through cost leadership or through differentiation or focused. Once the strategy appropriate selected, this would be implementation. And implementation is transforming the plan into actual actions. So after this one, there is a controlling is what evaluation mean we would try to evaluate to monitor the courses of action to ensure it follows the strategy और फिर हम फाइनली उसके फीडबैक की तरफ आ जाएंगे तो दिस इज इनके दरमियान जितनी भी कोई डेविएशन माय डियर हो सकती है वो हमारे स्ट्रेटेजिक मीन दैट्स रिस्क को वो करती है now, strategic risk mean VN, mission, objective, environment assessment, internal and competitor analysis, considering alternatives, implementation, evaluation. Now, in fact, ये जो चीज़ है जो noises शो किए जा रहे हैं ये noises इसका noise इसकी noise इसका noises ये हैं basically risk कि what mean the deviation or to that extent any sort of change may change your the course of action and your strategy may not be going to achieve its objective so strategic risk may be at the level of formation at the level of implementations. G, so far as we have discussed any question? Osama, मेरा ख्याल आपका सुना है कोई issue mic का है तो okay. Is it clear at the moment? Now, how do we manage risk? Now, this is the question. चूँकि risk हमें different types of risk हो सकते हैं risk की definition हमने देख ली for managing risk to manage risk we use the 6 risk management processes. First of all, risk management planning, risk identification, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, risk response planning, and risk monitoring and control. That is the steps involved. Like now, same we have shown here: risk management planning, risk identification, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, then risk response planning, and finally risk monitoring and control. Now that after this, the next step will be moving risk management planning की तरफ जो कि अब हमने step by step we have to talk about.
Mr. Anik, are you getting and listening me? Anik, Mr. Anik, are you listening me? Please. May I get your reply, gentlemen? Achha, okay. Now, first of all, risk management planning. The first step is this one. और इसमें tools and techniques, planning, meetings and analysis would be done. Once the now what is risk management plan? अब उसमें क्या क्या risk आ सकते हैं? Methodology, roles and responsibilities, budgeting, timing, risk categories and definitions. Methodology में the tool, the data, the approach we use वो हमें wrong हो सकता है. Role and responsibilities. Budgeting may resources to be put into risk management. Timing, when and how often. और रिस्क कैटेगरीज में क्या है कि रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम रिस्क को ब्रेक डाउन करते हुए उसको देखेंगे कि कौन कौन से रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं. और देन डेफिनेशन रिस्क प्रोबेबिलिटीज एंड इम्पैक्ट. माय डियर, वन थिंग रिमेंबर कि हम रिस्क में दो चीज़ें देखिए. एक हम देखते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और इम्पैक्ट से मतलब है कि उसका क्वांटम कितना है. हाउ मच देयर इज द क्वांटम बेसिकली इज used, and that is the basically point. Once the risk management planning completed, now the next is risk identification. इनफैक्ट रिस्क आइडेंटिफाई का मतलब है कि हमने रिस्क को देखना है कि कौन सा रिस्क है, उसकी आउटपुट और क्या है. अच्छा, अब रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, इसमें हम ये जो चीज़ें यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक, चेकलिस्ट एनालिसिस, असम्पशन एनालिसिस, डायग्राम टेक्निक्स, और फिर हम उस रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. आफ्टर दिस नाउ द टाइम कम जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हमें वी डू नीड टू कलेक्ट डेटा. तो माय डियर, data collecting techniques may be brainstorming, Delphi techniques, interviewing, root cause identification और strength weaknesses, वो जो हम SWOT analysis करते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम एक ये करेंगे कि कुछ लोग मिलके हम कुछ न्यू आइडिया जनरेट करते हैं कि व्हाट आर द रीजन व्हाई दिस इज गोइंग टू बी हैपन. तो दिस इज ऑल टेक्निक, डल्फी, इंटरव्यूइंग, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन. इसको फिश बोन एनालिसिस भी कहते हैं, ये जो रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें हम हर जो उसकी जो रीज़न जो कॉज होती है उसके पीछे जो इम्पैक्ट होता है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होती है और हम उसको फिर फाइंड करने जाते हैं. और दिस इज अ वे लाइक. Now that the risk may be qualitative or it may be quantitative risk. In fact, the qualitative risk analysis involve the organization. इसमें input क्या होगी कि हम organizational process assets, project scope statement, risk management plan, risk register, टूल एंड टेक्निक्स में हम रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स, रिस्क डेटा क्वालिटी असेसमेंट,
रिस्क कैटेगराइजेशन, रिस्क अर्जेंसी असेसमेंट, और देन द रिस्क, ये हमारी आउटपुट जो मीन अपडेटेड जो भी होगा, वी हैव मेड इट लाइक। इन फैक्ट माय डियर, वो जो हमने बात की थी कि जो रिस्क है वो दो चीज़ों पे बेस कर रहा होता है। वन इज द प्रोबेबिलिटी, द अदर इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन के उसका लाइक वो कितने लोगों को कितने लेवल के ऊपर वो चीज़ इन्फ्लुएंस करता है, और प्रोबेबिलिटी उसकी लाइकलीहुड है। अब कॉन्सिक्वेंसेस किसी चीज़ के वो इम्पैक्ट है। जिस चीज़ के जितने कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होंगे वो उतना ही इम्पैक्ट ज़्यादा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कम हैं उसका इम्पैक्ट कम है। तो हम इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट में, तो इम्पैक्ट कैन बी सीन with respect to extreme, high, moderate, low, negligible. एक्सट्रीम में फर्टेलिटी और मल्टीपल फर्टेलिटीज एक्सपेक्टेड, चूँकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जितना उसमें फर्टेलिटीज फैटल और मल्टीपल फर्टेलिटीज एक्सपेक्टेड होंगी वो उतना ही एक्सट्रीम होगा। Severe injuries or disabilities likely are some potential for fatality. High, moderate में हम क्या है कि लॉस टाइम और इंजरी लाइकली और सम पोटेंशियल, मतलब उसमें लॉस टाइम हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, ये मॉडरेट है। लो में क्या है कि फर्स्ट एड रिक्वायर्ड टाइप, स्मॉल रिस्क और सीरियस इंजरी। और नेग्लिजिबल में नो कंसर्न के हवाले के साथ होगा, मीन उसका इम्पैक्ट नहीं होता। सो फॉर एज प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न, अगेन प्रोबेबिलिटी में लाइक दिस इज लाइकलीहुड, तो नॉट लाइकली, लो, मॉडरेट, हाई, एक्सपेक्टेड, ई। तो ये चीज़ों को हम देख के, बट आई थिंक वेन एवर द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क इज डन, तो माय डियर रिस्क इन्वॉल्व इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी। नाउ स्ट्रेटजीज जो हैं रिस्क के लिए, हम नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, दैट माइट बी अ पॉजिटिव रिस्क। Negative have been called as threats, while that positive have risk or opportunities. A negative risk should be avoided, can be transferred, can be mitigate, mean to eliminate or to minimize, या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आप स्ट्रैटेजीज क्या यूज कर सकते हैं? यू मे अवॉइड, यू मे ट्रांसफर, यू मे मिटिगेट, और यू मे एक्सेप्ट। On the other side, positive risks or opportunities you may exploit, mean उसको अवेल करना, शेयर करें, इनहेंस करें, या एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाएं। थैंक यू। तो माय डियर, वी वर टॉकिंग एक हम जब इसको देखते हैं तो इस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, इवेल्युएट द रिस्क और ट्रीट द रिस्क। तो ये एक और एंगल है, बात वही थी इसमें। नाउ फॉर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट करने की दो बेसिक स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं। वन इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज मे बी रिएक्टिव or maybe proactive. Under the reactive, risk management or react after its appearance, मीन के हम उसको मैनेज करेंगे, लेकिन जब वो चीज़ हो जाएगी और उसके बाद देन वी आर ट्राइंग टू, मसलन एक मशीन ब्रेक हो गई और फिर हम उसको ठीक करने जाएंगे, ये रिएक्टिव अप्रोच है। सो प्रोएक्टिव के अंदर क्या है? रिस्क मैनेजमेंट और प्लानिंग बिफोर इट्स अपीयरेंस। मीन इसको अगर हम थोड़ा सा टीकेएम के हवाले से देखें तो एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स होते हैं, एक फीडबैक कंट्रोल्स होते हैं।
तो माय डियर, जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स हैं वो आपका प्रोएक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। इसका मतलब उन कंट्रोल्स के लगाने से जो फ्यूचर में जो चांसेस ऑफ एरर होने के हैं, डिवीशन होने के हैं, वो आप उसको एलिमिनेट कर देते हो। That is basically called the proactive. So far as feedback control is concerned, these sort of reactive one mean कि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए और ख़राब को ठीक करने के लिए जो कुछ आप कहते हैं, तो दिस इज़ अ रिएक्टिव वन। मेरा ख्याल है अगर हम आज की दुनिया में अगर आप लोगों से पूछें कि which sort of controls you would like to use in your system, so my dear, the system that would be the proactive sort of system would be used. uh, Mr. Azim, please. अजीम, आप सुन रहे हैं मुझे? अजीम, एक्सक्यूज मी। अजीम, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके, so what we can conclude in this one, which sort of strategy is more better, but anyhow, reactive and proactive. So in the modern time, proactive strategy is much more better, और mean that proactive होने के लिए हमें अपने कंट्रोल सिस्टम वो हमें फीड फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना होंगे। और रिएक्टिव मीन के कंट्रोल एट द लेटर स्टेज के जब मीन प्रोडक्ट इफ इज कंप्लीटेड 100%, तो तब जाके आप उसको ठीक करो। तो दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिव अप्रोच। Actually, now we are going to talk in a more specific sense. What is the risk? Risk is defined as uncertainty resulting in adverse outcome, adverse in relation to planned objectives or expectations like. देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि असल में an uncertainty resulting in adverse outcomes, adverse in relation to planned objective or expectation। कि मतलब है कि जो आपने प्लान किया है, जो आप चाहते हैं, उसके अंदर जो वेरिएशन होने के हो सकती है, उस वेरिएबिलिटी को हम रिस्क कहते हैं। तो financial risk are uncertainties resulting in adverse variations or fluctuations of profitability or outright losses. Mean that the goal, the sale target you have set, that is of 2 or 50 million. Now, what is the chance that that is able to be met, or if not to be met? तो वो जो chance of not achieving that target basically is called the that is the uncertainty. अब उसको रिस्क कहते हैं। रिस्क में हमेशा जो अनसर्टन चीज़ होती है, कीप इन माइंड, अक्सर लोग कहते हैं कि अनसर्टेनिटी रिस्क है। अनसर्टेनिटी बेसिकली कॉज है फॉर द रिस्क, बिकॉज हर रिस्क में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अचीविंग द एक्सपेक्टेड आउटकम, और प्लस दूसरा इसमें क्या है कि उसका क्वांटम देखना पड़ता है कि हाउ मच द लॉसेस वुड बी अकरिंग। बट एनी हाउ, आई होप सो you get this understanding. Azim, I'm expecting थोड़ा सा आप बोलें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। एक तो आपकी आप लेट एंट्री हुई आज। अगेन कोई स्टूडेंट्स, दैट इज जस्ट लाइक आई मीन 3 लोग हैं। अच्छा, एनी हो अजीम, रिस्क
को जो मैंने बताया है वो, डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। कोई इसमें कोई कंफ्लिक्टिंग बात हो, कोई पूछना चाहें आप? मैंने कहा है कि एक्चुअली बात होती है कि रिस्क रिस्क होने की रीजन अनसर्टेनिटी है, लेकिन कीप इन माइंड हम जब कहते हैं ना चीजें अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन का मतलब ये है कि उसमें वेरिएशन है, और इट मे एंड मे नॉट बी। फिर हम उसको जब मैयर कर लेते हो, तो वो जो एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड द डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम, वो जो टारगेट जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 100% आप हिट कर लोगे तो देयर इज नो रिस्क, बट टू द एक्सटेंट दैट दिस टारगेट वुड नॉट बी अचीव्ड, बस वो रिस्क है। तो रिस्क में दो चीजें होंगी, एक उसकी प्रोबेबिलिटी होना जरूरी है, और दूसरी उसकी डेविएशन में वेरिएशन क्या चीज कितनी होगी। गॉट इट? यस सर। नाउ द ये तो मेरा हल, हाँ जी, दोबारा हो गया। जी जी। रिस्क, the risk could be either lower or higher. Lower risk implies lower variation or fluctuations in net cash flows. Higher risk implies higher variation or fluctuation in the net cash flow. देखा अब कि असल में जब हम कहते हैं ना हाई रिस्क है, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है वेरिएशन की, और जो लो है उसका मतलब उसमें वेरिएशन लो है। इसका मतलब जितनी डेविएशन किसी चीज में ज्यादा होगी, रिस्क उतना ही होगा, और प्लस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये दो चीजें, वेरिएशन वेरिएशन लीड्स टू हाउ मच वी आर अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड, और वो जो गैप होगा और फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट ये सर मिल। जी जी। सर इसकी स्लाइड्स आपने ये शेयर कर दी थी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। नहीं, अभी मैं नहीं की थी, लेकिन अभी अभी मैं करूंगा आज। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, नो माय डियर, जीरो रिस्क इम्प्लाइज नो वेरिएशंस। जब हम कहते हैं ना इसमें जीरो रिस्क है, तो इन अदर सेंस आप कहते हैं कि नो वेरिएशन। बाय implication it also means lower returns as compared to others. इसका दूसरा मतलब ये भी है कि उसमें इसके दो तीन मीनिंग बन रहे हैं। दूसरा एक क्या है कि जब आप कहते हैं कि दूसरे के मुकाबले में उसमें लोअर रिटर्न्स हैं, लोअर उसमें है एज कंपेयर टू अदर, किसी दूसरे के मुकाबले में रिस्की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। टू अस्यूम मतलब किसी मार्केट जो रिस्की एक्टिविटीज के मुकाबले में उसमें कम है, तो हम कहते हैं जी उसके मुकाबले में कम, तो मतलब ये नॉर्मली कहा जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि उसके वो रिलेटिवली लोअर रिस्क है, लेकिन जीरो रिस्क का मतलब है कि नो वेरिएशन एट ऑल। टू अस्यूम जीरो लो हाई रिस्क डिपेंड ऑन द रिस्क एपिटाइट ऑफ द बिजनेस फॉर द इन्वेस्टर। अजीम, इसमें इसको तर्जमा कीजिएगा प्लीज। Azim, Mr. Anik, can you explain such one like? Azim, इसको explain करें, क्या मतलब है इसका? जी जी। असीम, जी सर। इसको इसको ट्रांसलेट करें, क्या मतलब बनता है? अस्यूम जीरो लो हाई रिस्क डिपेंड अपॉन द रिस्क एपिटाइट ऑफ द बिजनेस। सर रिस्क एपिटाइट का मतलब है कि वो जो अभी आपने बताया था कि अप टू द एक्सटेंट, मतलब इसमें अगर मैं कहूँ तो एपिटाइट का मतलब क्या है सर? जितना वो ऑब्जॉर्व कर सके सिस्टम। वैसे भूख को कहते हैं, भूख। मतलब इसका जितना मतलब वो, जितना लेना चाहता है वो। हाँ जी, जितना लेना चाहता है वो।
हाँ वो ठीक थी, मैं वैसे उसको क्लैरिफाई अब कर रहा हूँ। वैसे भूख को कहते हैं, मतलब आप में अजीम वुड लाइक टू टेक अ रिस्क टू द एक्सटेंट दैट अजीम हैविंग द एपिटाइट, mean how much Azim is interested to take the risk. So risk may be low, risk may be high, risk may be like. इसीलिए there are three risk behaviors are there, जिसको हम रिस्क कहते हैं अवर्स, that is रिस्क yes अवर्स, risk averter, averse या रिस्क averter, अवॉइडर। risk seeker और risk ठीक है avoider। इनमें लास्ट टाइम भी एक दफा पहले हमारी डिस्कशन मुझे याद है कुछ आपसे हुई थी, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहोगे अजीम ये क्या है? रिस्क सीकिंग, रिस्क अवर्टर, रिस्क अवॉइडर। सर। रिस्क सीकर जो होते हैं ये मॉडर्न माइंड के पर्सन होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना जानते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो रिस्क अवर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, जो रिस्क अवॉइडर होते हैं वो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, ज्यादा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, ज्यादा रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट्स नहीं लेते, बल्कि मिनिमम जो भी आ रहा है उसी पे बस रिलाई करते हैं। जबकि जो रिस्क सीकर होते हैं वो मैक्सिमम रिटर्न हासिल करने की कोशिश करते हैं, रिस्क ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। मेरा ख्याल है मैं दोबारा कहना चाहूंगा अजीम, तीन हैं बिहेवियर, एक रिस्क अवर्टर है, एक रिस्क सीकर है, एक रिस्क अवॉइडर है। आपने थोड़ा सा चीजों को मिक्स कर दिया है, वो चीज दोबारा बताइएगा। सर सीकर तो मैंने कहा है जो मैक्सिमम रिटर्न लेना चाहते हैं, मॉडर्न माइंड के बंदे होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट्स में मतलब इनिशिएट करना चाहते हैं, हर वो चीज जिसमें रिस्क भी ज्यादा हो, रिटर्न की खातिर ज्यादा मतलब स्टेप्स लेते हैं, वो रिस्क सीकर्स होते हैं। और जो ठीक रिस्क है। अवॉइडर होते हैं, रिस्क अवॉइडर वो होते हैं जो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, जितना भी रिटर्न आ रहा हो बस ठीक है, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वो न्यूट्रल मतलब मतलब वो अब यहाँ मेरी बात सुनिए बेटा जी, यहाँ आके प्रॉब्लम आ गया कि जो अवॉइडर है ना, वो तो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, वो अवॉइड करता हाँ है। जी, वो अवॉइड करता है, बस वो हाँ रिलाई तो कर रहा आप होता है कह जो रहे उसके हो पास होता है। नो, हाँ यहाँ आपने थोड़ा सा आपकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं थी। जो कि आप कह रहे हैं, देखो मैंने जब रिस्क अवॉइड करना है ना, तो मैं फिर उस जगह पे जाके इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बस सिंपल सी बात है, आई हैव अवॉइडेड। ठीक है। मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता, तो जाहिर बात है मैं कॉमन शेयर क्यों खरीदूं? जो कि कॉमन शेयर लूंगा उसमें तो रिस्क है। अब मैंने अवॉइड कर दिया अपनी, आई हैव नॉट टेकन दैट सॉर्ट ऑफ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके। तो माय डियर, अगर आपने रोड का रिस्क नहीं लेना तो प्लीज डोंट ड्राइव, क्योंकि जब आप रोड पे आओगे तो रिस्क तो है। रिस्क एवर्टर बताइए क्या होता है? सर याद नहीं। देखो रिस्क एवर्शन होती है कि आप अपने रिस्क को कम करते हैं किसी तरीके से। मसलन आपने गाड़ी ली, नई गाड़ी जब ली है तो उसमें आपने ट्रैकर लगवाने की कोशिश की, आपने उसको इंश्योरेंस करवाने की कोशिश की। असल में वो इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं? आप अपने उस रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं, चूंकि ये वाला रिस्क नाउ यू आर शिफ्टिंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। तो जब आप ट्रैकर लगवाते हैं, उसकी अश्योरेंस करवाते हैं, तो लिहाजा आप दूसरे लफ्ज़ों में आप उस रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जब आप हेजिंग में जाते हैं तो आप प्रोटेक्शन मांगते हैं, वो आपकी टेक्निक जो होती है वो रिस्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रही है और रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइडर में आप रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे बाय इन्वेस्टिंग और बाय गेटिंग इंश्योरेंस, चूँकि आप उसके ऊपर एडिशनल प्रीमियम पे करके आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी का जो थेफ्ट वाला या एक्सीडेंटल कोई लॉस है वो मैं खुद लेने के बजाय आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द कंपनी।
Got it? अजीम, अजीम आपकी आवाज नहीं आ रही. जेंटलमैन, जी सर, राइट। गॉट इट? क्लियर है? जी सर। Okay. Now, रिस्क मेजरमेंट, चूंकि हमें रिस्क को मेजर करना है. रिस्क मेजरमेंट इज एन important aspect of risk management. It quantifies the amount of risk. Risk measurement seeks to capture variation in earnings, market value, losses due to default, etc. Quantitative measurement of risk can be classified into three categories: measurement based on sensitivity, measurement based on volatility, or measurement based on downside potentials. Now we are going to talk turn by turn regarding this one. Now, what is basically the risk measurement sensitivity? Sensitivity capture the deviation of a target variable in response to a unit movement of a single parameter. Here, the target variable could be bond prices in case of portfolio of bonds, and the parameter could be the interest rate. That is to say, what would be the downward movement in the price of coupon bearing bond target variable for a 1% upward movement in the interest rate. तो माय डियर, सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारे उस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बॉन्ड्स की प्राइसेस में कितना चेंज आती है, और 1% चेंज आने से इंटरेस्ट में हाउ मच देयर इज चेंज इन द bonds prices. So that would be called the risk measurement in terms of sensitivity. So that is next is a volatility. Volatile mean के characteristics, the stability or instability of a random variable. This is statistical measure of dispersion. Higher the volatility, higher the risk. तो माय डियर, हम देखना चाहते हैं कि किसी चीज में डिस्पर्शन किसको कहते हैं कि हाउ मच वी आर अवे फ्रॉम स्टैंडर्ड. दैट्स व्हाई यू मेजर द स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर आपका डेविएशन जितना ज़्यादा है उसमें डिस्पर्शन ज़्यादा है, जितनी डिस्पर्शन ज़्यादा है उसमें वेरिएशन उतनी ही ज़्यादा है, और जितनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसमें रिस्क ज़्यादा होगा. Downside potential is what? It is the most comprehensive measure of risk as it integrates sensitivity and volatility with the adverse effect of uncertainty. This is the measure that is most relied upon the banking and financial services industry and also the regular regulator. The value of risk, VAR, value of risk, is a downside risk measure. Got it? Now, my dear, traditional approach of risk management क्या है कि हम establish context, risk identification, रिस्क असेसमेंट और फिर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं. इन योर टीम डेवलप अ रेलेवेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस. मीन दैट रिस्क में पर्पस डिफाइन करें, ऑब्जेक्टिव, और यू मस्ट हैव टू टेक अ सर्टेन अजम्पशन. नाउ दैट द रिस्क is what? Risk basically is to understand risk event where possible to do so, and the effect of its consequences, return and cost on organization. जी, मिशन एंड आउटकम्स लाइक. देखें, इसमें
टू सेकंड जो बात हमने, पहली बात हमने क्या कही है कि अंडरस्टैंड रिस्क इवन, दूसरा हम क्या है टू क्वांटिफाई, हमें वो जो पहले भी हमने द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट रिलेटिंग टू एनी स्पेसिफिक रिस्क को हमें क्वांटिफाई करना होगा, फिर हमें मैनेज करना है। देखिए पहला हमने रिस्क को हमने अंडरस्टैंड किया, फिर क्वांटिफाई किया, अब आगे हम क्या है फिर रिस्क को मैनेज करने जाते हैं। और ये पिक बड़ी खूबसूरत है कि जिसमें हम चल रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट, ताकि हम इसको कर सकें। और मैनेजिंग इज व्हाट टू आइडेंटिफाइड रिस्क थ्रू मिटिगेट स्ट्रेटजीज एंड कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। अच्छा, आप थोड़ा सा अजीम थोड़ा सा मुझे बताइए कि हाउ यू आर मैनेजिंग दिस रिस्क। वो कहता है जी मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज और कॉन्टिजेंसी प्लानिंग से आप इसको मैनेज करते हैं। अजीम, हाउ? मिस्टर अजीम, एक्सक्यूज मी, अजीम बोलिएगा। मिस्टर अजीम, अनीक आप बोलना चाहेंगे प्लीज? अजीम, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट द रिस्क। और ये सब बताने का मतलब था रिस्क प्रोसेस, रिस्क रिस्क लाइक अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या देखना है, रिस्क likelihood that a threat will exploit vulnerabilities, weakness, threats, potential danger, impact, magnitude of harm। थ्रेट को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, मीन देखेंगे, वल्नरेबिलिटी, और वल्नरेबिलिटी रिजल्ट इन लॉस। ये ज़रा चीज़ों को, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी लॉसेस में, तो ये है वो रिस्क। रिस्क वल्नरेबल कितना है, मीन उसका कितना, और फिर उसमें थ्रेट्स कितनी हैं, और थ्रेट क्या, फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ हार्मनेस को देखते हैं। थ्रेट क्या है? अब event that compromises confidentiality, integrity, or availability, malicious human threats, accidental human threats, और environmental threats, ये बेसिकली हमारी थ्रेट्स होती हैं जिनकी वजह से थ्रेट्स को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हम वल्नरेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, और वल्नरेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है वो लॉस होता है। नाउ दैट थ्रेट्स तो हम पहले देख चुके हैं जी। थ्रेट असेसमेंट अब आ गई, हम किस तरह करेंगे कि थ्रेट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई potential threats, likelihood of threats, priority, potential impact, security control. After the threat assessment, mean that a flaw or weakness in software or hardware process, lack of update, default configuration, lack of up-to-date malware protection, no firewall, lack of organization policies. Now that a risk response technique में हम क्या करेंगे, मेथड अवॉइड करो, ट्रांसफर करो, मिटिगेट करो, एक्सेप्ट करो। अवॉइड में नॉट पार्टिसिपेट इन रिस्की एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया था कि रिस्क 3 बिहेवियर्स होते हैं, और अवॉइडिंग में यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिस्की एक्टिविटीज। ट्रांसफर में क्या होता है कि आप ये वाला काम आउटसोर्स कर देते हो, जैसे आपने परचेज इंश्योरेंस कर ली, समटाइम्स रेफर टू एज शेयरिंग रिस्क। मिटिगेट में क्या है कि इम्प्लीमेंट कंट्रोल टू रिड्यूस रिस्क, एंटी मालवेयर रिड्यूस रिस्क फ्रॉम, तो आपने अपने यहाँ को कंट्रोल बेहतर किए, लगाए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जिससे वो रिस्क होने के चांसेस कम हो गए, और या फिर यह है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो। तो माय डियर, बेसिकली रिस्क may affect the achievement of the strategy more in some area than in other.
wholly unforeseen events might affect the viability of navigating between A and B. ये है आपकी करंट, ये है, ये आप डिजायर्ड पोजीशन है, इसके दरमियान जो ये जो चेंजिंग जो चीज़ें हैं, दैट बेसिकली इज पोजिंग अ रिस्क, मीन व्हाट इज द चांस दैट यू मे नॉट बी able to get this one. तो this hurricane denotes to the risk line, ये hurricane है, ठीक है, या ये बंदा काट रहा है, तो हो सकता है एक ऐसा तेज हवा का तूफान आए, और ये चूंकि लकड़ी अब बड़ी कमज़ोर हो चुकी है और इसके आने से ये नीचे गिर सकता है. दिस इज द रिस्क बेसिकली इज एसोसिएटेड. रिस्क स्ट्रेटजी डिस्प्लेसमेंट. तो अब हम क्या करेंगे कि सम रिस्क हैव ग्रेटर इम्पैक्ट देन द स्ट्रेटजी फॉर सॉ, सम हैव अ लेसर इम्पैक्ट. सो द नेट रिजल्ट इज जनरल डाइवर्जेंस from the desired outcome. Change risk is also one type of risk. Change risk is operates at a strategic, operational and project level. Keep in mind कि आपके जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ऑपरेशन लेवल के ऊपर, प्रोजेक्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उससे भी तो रिस्क आता है. उसको हमने क्या नाम दिया? चेंज रिस्क. चेंजेस कैन बी इम्पोज्ड बाय वेरिएशन elsewhere, either within or outside the organization, or can be planned and engineered by the organization as a way to achieve objectives. For example, if an organization realizes that it has to install a new production line in order to meet a sudden and unforeseen increase in demand for the product. My dear, financial and knowledge risk. These risks can apply at any time of the four risk level discussed at the earlier slides. Financial risk includes market, credit, capital structure, and reporting risk. For example, the possibility that the shareholders will lose money when they invest in a company that has debt if the company's cash flows proves inadequate to meet its financial obligation. देखिए ऐसा है कि कंपनी का डेट रेशो बढ़ने से, गियरिंग रेशो बढ़ने से, लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज के ज़्यादा लेने से, ज़्यादा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ इशू करने से, तो कंपनी के अंदर रिस्क फैक्टर आते हैं और देयर इज़ अ चांस कि कंपनी आने वाले टाइम को मुमकिन है अपने लाइबिलिटीज़ को पे ना कर सके. ये वाला जो रिस्क है इसको हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं, जो मार्केट, क्रेडिट, ये कैपिटल स्ट्रक्चर एंड रिपोर्टिंग रिस्क की वजह से होता है. आल्सो रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट डिफॉल्टिंग ऑन इट्स बॉन्ड्स विच कुड कॉज दोज बॉन्ड्स होल्डर टू लूज मनी. इस तरह जो कंपनीज जब बॉन्ड्स इशू करती हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, तो अगेन मुमकिन है कि आने वाले टाइम में दे मे नॉट बी एबल टू पे ऑन देयर राइट टाइम. So that's why I think there is a risk, and that sort of risk would be called the financial risk. Example में जब हम रिस्क में भी इंटरनल, रिस्क में भी एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जो रिस्क है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क, वॉलेटिलिटी रिस्क, कन्वेक्सिटी रिस्क, टाइम डिपेंडेंट रिस्क, कंपेटिटर रिस्क, कस्टमर डिमांड रिस्क, exposure risk, shareholder risk, political risk, and legislative risks. Internal risks may involve operational process risk, legal risks, liquidity risks, supply chain risk, competence risk, complexity risk, IT and technology risk, people risk, and the residual risks. My dear, so far as speculative and static risk is concerned, a speculative is one that can lead to gain or loss. The net outcome can be either positive or negative. देखिए, इनफैक्ट हम स्पेकुलेट करते हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में प्राइसेस अप होंगी,
बुलिश होंगी और उस बेस पे वी बाय कि इन फ्यूचर द प्राइसेस वुड गो अप. But if what we have intended or market behave negatively or adversely, कि हम समझ रहे थे कि अप जाएगी लेकिन मार्केट अप जाने के बजाय नेगेटिव हुई, तो डियर दिस इज सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेटिव रिस्क, हमें लॉस होगा. तो क्या है कि एग्जांपल है कि आप बेट ऑन अ हॉर्स, जब आप एक हॉर्स के ऊपर एक बेट लगाते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा और वो ना जीते, तो speculative risk can be split into two primary component, that is a business risk and a financial risk. Now speculative risks, business risk arises from the company trading with its assets. तो जब कंपनी अपनी एसेट्स की ट्रेडिंग करती है तो उसमें स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. Speculative financial risk arises from the gearing ratio, which is measure of the financial of the organization. तो रिमेंबर अभी हमने वो जो बात की थी कि जो हमारी डेट के बढ़ने से, तो वो एक स्पेकुलेटिव रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क है. उसकी वजह ये है कि इनफैक्ट the chances of due to the ratio of the debt, so there is a chances that such sort of things would be involved. Now how risks can be classified, my dear? So the risks can also be classified in terms of the degree of hazards and the control that are necessary to protect against that hazards. तो रिस्क हम कह सकते हैं इज द फंक्शन ऑफ इवेंट, हैजर्ड एंड कंट्रोल. इवेंट मीन दैट उसका होना, हैजर्ड में उसमें क्या क्या नेगेटिविटी इन्वॉल्व है और उसमें कंट्रोलेबिलिटी क्या है. So the classification process identifies the importance of the risk. It highlights those risks that are critical and those that can perhaps be left alone for a while. This identification and rating can be based on likelihood and impact or on control and hazards. So, ladies and gentlemen, this is what that we have explained today regarding the risks or certain issues. Now, please, I would like to take your questions, like if you have. Ji, please, Azim. जी. अनीक साहब, एक्सक्यूज मी. मिस्टर असीम, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. सर वो चलिए जी. उसामा पूछ रहे कन्वेक्सिटी रिस्क के बारे में, वो उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आ रहा है. कौन सा? सर उसामा पूछ रहे कन्वेक्सिटी रिस्क के बारे में. सर वो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, उसमें सर कुछ सवाल उसमें आ रहे हैं जिनका माइक काम नहीं कर रहा है ना, वहां पे वो टाइप कर रहे हैं. अच्छा अच्छा. देखिए, कन्वेक्स रिस्क का यहाँ मतलब ये है कि जो रिस्क अपने एक ही सेंटर की तरफ मूव करते हैं, और जैसे कन्वर्जेंस हमने फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मिलके एक ही फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कन्वेक्सिटी ऑफ रिस्क हो. जी प्लीज.
जी प्लीज जी, फर्दर क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में सर वो टाइप कर रहे हैं बच्चे, उसमें आप काइंडली देख लेंगे सर। वो मैं कहाँ देखूंगा जी? सर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा एक साइड पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वाला, क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, उस अच्छा, पर नंबर क्वेश्चन भी टाइप हुए हैं कि कितने हैं, वो आप खोलें ना तो उसमें आपको पता लग जाएगा सर। ठीक है, ठीक ठीक। ओसामा, आई थिंक यू हैव सेड, देखिए कन्वेक्सिटी के हवाले से सुनिए दोबारा। इन फाइनेंस, बॉन्ड कन्वेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ द नॉन लीनियर रिलेशनशिप, मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता। बॉन्ड कन्वेक्सिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइसेस के चेंज होने से उसकी कितनी चेंज हुई। एक होता है कि लीनियर रिलेशनशिप, हम देखते हैं कि जब प्राइसेस हमारी 10 थी, prices was increased by 11, prices was increased by 15, prices increased by, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप को, नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आज प्राइस कितनी है और उसका क्या इम्पैक्ट है, और अगले दिन प्राइस कितनी है और कितना ही। दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज बेसिकली द convexity is a measure of the non-linear relationship of bond prices to change in interest rate, ठीक है। और ये एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर ये चीज है जी। आई होप सो कि यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट्स नाउ। जी प्लीज। अनीक, आप बोलना चाहेंगे कुछ? अजीम, आज आप बोल नहीं रहे, आवाज क्या क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी, फर्दर एनी क्वेश्चंस? चले जी, ओके, मेरा ख्याल आज का सेशन हम खत्म करते हैं, कल मुलाकात रहेगी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।